everyone, welcome back. I hope you are all doing good and enjoying the lessons. Okay, so this is class 9 Seba history textbook, and we are doing chapter number 2, which is growth of Indian nationalism. And today we will be starting with Ramakrishna Mission. Previous parts have already been uploaded, you can check those out. Alright, so let us begin. The Ramakrishna Mission was established to spread the message of Ramakrishna Paramhansa. तो रामकृष्ण परमहंसा एक पर्टिकुलर इंसान थे, सिंपल एंड पायस मैन, रिलीजियस मैन थे. उनके मैसेज, उनके टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए रामकृष्ण मिशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था. रामकृष्ण परमहंसा was a simple and pious man. His teachings attracted a large number of followers towards him. वो जो भी प्रीच कर रहे थे रामकृष्ण परमहंसा, उनकी टीचिंग्स की वजह से, उनके लेसन्स की वजह से उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए. ठीक है. द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन वॉज स्वामी विवेकानंदा. हिज रियल नेम वॉज नरेंद्रनाथ दत्ता. ओके, सो स्वामी विवेकानंदा वॉज वन ऑफ द फॉलोअर्स और डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंसा. उनका रियल नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता. Vivekananda, then a meritorious student of Calcutta University, was fascinated by Ramakrishna's personality and became his disciple. विवेकानंदा या फिर नरेंद्रनाथ दत्ता पढ़ रहे थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. और वो जब रामकृष्ण परमहंसा के टीचिंग्स सुना, उन्होंने मैसेज सुना, तो उनके बहुत बड़े फ़ैन हो गए. एंड देन ही बिकेम हिज डिसाइपल. ओके, आफ्टर परमहंसा's death he established a mission in 1897. Swami Vivekananda wanted to spread the true message of Hinduism far and wide. So it was all related to Hinduism. और वो चाहते थे कि ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज़्म नहीं, हिंदुइज़्म का जो असली मैसेज है वो विश्व भर में फैले. He wanted to create a sense of love for the country among the youth, infuse in them self-confidence and develop spirituality in their minds. तो ये समझने पहले से आप लोग ये समझिए that जब ब्रिटिश रूल आया था, then what happened was ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम या फिर ब्रिटिश का खुद एटीट्यूड ऐसा था. इंडियंस या फिर इंडियन यूथ थे, वो लोग अपने आप को इन्फीरियर समझने लग गए थे, अपने आप को छोटा समझने लग गए थे. दे थॉट दैट इंडियन कल्चर में कुछ नहीं है, इंडियन कल्चर इज़ बैकवर्ड, देयर इज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम इट, एंड वट एवर वी कैन लर्न वॉज फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर. बट सम पीपल लाइक स्वामी विवेकानंदा, दे वॉन्टेड टू डीमिस्टिफाई ऑल दिस. उन सभी को रॉन्ग प्रूफ करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि इंडिया के यूथ वो बिल्ड करे अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स एज वेल एज इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड हेरिटेज. ओके, ही वांटेड टू यूनाइट द इंडियंस एज वेल एज prove the fact that Indian philosophy and spiritual ideas were the best in the world. He worked hard to spread this message to the different parts of the world. So he was a very visionary individual. He wanted that Indian philosophy, इंडिया का जो core values है वो दुनिया भर में फैले and लोग जाने what India truly is. Through his speeches, Vivekananda infused among the people a sense of pride in India's culture and heritage. His striking oratory at the Parliament of Religions held at Chicago in 1893 deeply stirred the conscience of the American people. So what happened in 1893? Vivekananda gave a speech at Chicago in America. It was an occasion of the Parliament of Religions. Okay, and that speech is very well known and very celebrated speech, जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट करना या फिर इंडिया के हिंदुइज़्म को रिप्रेजेंट करना, इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करना was one of the turning point, and it was highly appreciated by the American people. His learned interpretations on Hindu culture and India's glorious past made a great impression on Indian minds. It prepared them to face the challenges of British imperialism. So how it is related to growth of Indian nationalism? Because directly उन्होंने
maybe he didn't participate in national movement or something like that, but what he did was uh, he studied deeply the Indian culture, Indian philosophy, Indian texts. Okay, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने किया था. So whatever he was saying about Hinduism or India के culture and philosophy, it was based on his deep study. वो हवा में बात नहीं कर रहे थे. Okay, it was not just false love that he was displaying for his country. It was real research on his part. एंड बाय दिस जब लोगों ने इनको पढ़ा, लोगों ने इनकी स्पीचेस सुनी या फिर मैसेज समझ में आया, then Indian people were really inspired, and they kind of sense had a sense of pride in their own country, heritage, philosophy, which gave them moral support to fight against British imperialism या फिर colonialism. Okay. नेक्स्ट या एक मूवमेंट है या फिर सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज द थियोसॉफिकल सोसाइटी. द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज एन इंटरनेशनल सोसाइटी. ओके, ये इंडिया के बाहर ओरिजिनेट हुआ था दूसरी कंट्री में, फिर वो उसको इंडिया का ब्रांच में भी खोला गया था. Originally it was founded in New York in 1875. Okay, then its branch was opened in India at Adyar in Madras in 1885. आज का जो तमिलनाडु चेन्नई एरिया है उसको तब मद्रास बोलते थे, and it was opened at a place called Adyar. Starting with Madras, the society, however, became a great social force in Indian life because of the efforts of Mrs. Annie Besant. Okay, तो धीरे धीरे Theosophical Society became an important organization in Indian life. Okay, and it was chiefly due to the efforts of one Irish lady. Okay, जो आयरलैंड से बिलोंग करती थी, उनका नाम था मिसेस एन बेसेंट, एंड वो इंडिया में सेटल हो चुकी थी 1893 में. इट वॉज शी हु रीऑर्गेनाइज एंड पॉपुलराइज द मूवमेंट इन इंडिया. सो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मूवमेंट या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको पॉपुलराइज करने का क्रेडिट दिया जाता है वो है मिसेस एन बेसेंट को. हाउएवर शी वाज नॉट द ओरिजिनल फाउंडर. जो न्यूयॉर्क में फाउंड किया गया था सोसाइटी को, शी वाज नॉट द ओरिजिनल फाउंडर, बट इंडिया में उनका काम बहुत ही सराहाया गया. Through social service, she wanted to revive among the Indians a sense of self-respect and pride for India's past. Okay, so Annie Besant, हम लोग सोच सकते हैं कि Annie Besant, why she was so much eager to help out Indians. First of all, she was a social service philanthropist थी वो. ओके, उनको सोशल सर्विस करना अच्छा लगता था. एंड देन शी वॉज एन आयरिश लेडी, आयरलैंड को बिलोंग करती थी. एंड जस्ट ब्रीफली आई वॉन्ट टू टेल दैट तब आयरिश पीपल वेर फाइटिंग अगेंस्ट इंग्लिश पीपल, फाइटिंग अगेंस्ट डोमिनेशन, होम रूल. ओके, बिकॉज इंग्लिश आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इन सबको मिला के ब्रिटेन बनता है. एंड मोस्टली ब्रिटेन में जो डोमिनेट कर रहे थे वो थे इंग्लिश स्पीकर्स. सो आयरिश पीपल were fighting for this. So naturally, when Anne Besant came to India, when British were ruling, mainly English people were ruling, so she found a connection. Okay, so she wanted कि इंडियन लोगों में सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट आए, प्राइड आए, तभी तो वो लोग अपने आप में कुछ बेहतर करने का सोचेंगे, एंड देन दे विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. She reminded the Indians about the richness of Indian philosophy, culture, and heritage. By reviving ancient Indian idols and institutions, she was convinced that she could help the people to regain their lost faith and overcome their inferiority complex. Okay, so almost like every other mission, Arya Samaj, Raja Ram Mohan Roy ka Brahmo Samaj, Ramakrishna Mission, and then this Theosophical Society in India, it was all revolving around, instilling a sense of pride in India's ancient culture, traditions, and philosophy. All right. Hence, she started the Central Hindu School in Banaras in 1898, which ultimately became the Banaras Hindu University in 1916. So, in order to make Indian youth know about their own culture, उन्होंने शुरुआत की थी सेंट्रल हिंदू स्कूल की.
बनारस में, और वो अब बन चुका है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ओके. Annie Besant loved India like her motherland. She instilled among the educated Indians a new spirit of awakening and national sentiment. फिर इन 1916 में बेसेंट ने स्टार्ट किया होम रूल लीग. ओके. एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ सेल्फ रूल अमॉन्ग द इंडियंस. होम रूल लीग का यही मैसेज था दैट इंडियंस शुड बी एबल टू रूल देमसेल्फ. ओके. सेल्फ रूल, ना कि कोई बाहर की पावर्स जैसे कि ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड रूल करे इंडिया को. She presided over the Indian National Congress in 1917. She was the first lady president of Indian National Congress. Okay, अगर first lady president बोले तो it was of Indian National Congress, it was she and Besant. And first Indian lady president अगर बोलेंगे Indian National Congress का, that was Sarojini Naidu. Okay.